Hello everybody, welcome to ixamBee. This is Amrita. I'm your law faculty working here at ixamBee, and I'm here with you, before you, with the second video of the video series that I have started previous week for how to study various legal subjects for phase 2 examination of SEBI grade A. But before we start with our today's subject discussion, don't forget to subscribe to our YouTube channel and stay updated with such kind of videos and content that we keep on delivering you here at iXamBee. You can write to us at hello@ixambee.com, call on the number that you can see on the screen, and visit our website www.ixambee.com for further details relating to government exams preparation. So friends, we have started with the first set that was important, no doubt, how to study constitution, administrative law, principles of natural justice for SEBI grade A legal officer examination phase 2, how you have to go about with the preparation. Now I have come up with this second video. This is a video series and this is the second video out of that, and in this I'm going to cover another very important section from which many questions are also expected in phase 2 examination, and that is corporate law section. Friends, corporate law का वेटेज अगर आप देखोगे फेज 2 में कॉर्पोरेट लॉ का वेटेज इज वेरी लार्ज, दैट इज अराउंड 20%. 20% कोई छोटा नंबर नहीं है. और फेज 2 के लिए आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं होना है, बट यू हैव टू स्कोर वेल. Whenever you face your preparation, you prepare for phase 2, remember you have to score well, only then you can qualify and you can be appointed as a SEBI grade A officer, legal officer. तो corporate law का section आप neglect नहीं कर सकते. उसके लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कंपनीज एक्ट 2013 तो है ही, उसके साथ आपको पार्टनरशिप का सेक्शन ऐड हो चुका है, IBC पार्ट 1 पार्ट 2 भी ऐड हो चुका है. सो हाउ आर यू गोइंग टू स्टडी दैट? What all corporate law includes? Companies Act 2013, Limited Liability Partnership Act 2008, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Companies Law, Companies Act forms the bulk of entire corporate law. 17 chapters है आपको syllabus में. This will also help you predict that आपको इस पे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है. 15%, वो 20% में से अराउंड 15% आपका कंपनीज लॉ से एक्सपेक्टेड है. फेज 1 में भी काफ़ी क्वेश्चंस थे कंपनीज लॉ से, एंड फेज 2 में भी आएंगे. डोंट थिंक दैट फेज 1 में बहुत क्वेश्चंस थे, अराउंड 17 क्वेश्चंस थे आई सपोज. सो इट वोंट बी रिपीटेड, इट्स नॉट सो. कंपनी लॉ इज द मेजर सेक्शन फॉर SEBI ग्रेड एग्जाम, एंड उसके अलावा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इंसॉल्वेंसी, इन दोनों से भी अराउंड 2 to 3% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. आउट ऑफ दैट 15% ये साइड से, एंड बचा हुआ 3% 2% जो भी होगा वेटेज, इट विल बी सब्जेक्टेड टू चेंजेस, इट विल बी फ्रॉम दिस सेक्शन. सो दीज 3 sections you have to prepare very well so that all together you can be very confident at least on the 20% of the section. आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे बहुत ध्यान देना होगा. Now how are you going to study? As I have kept on telling you repeatedly for phase 1 also, phase 2 के लिए भी मेरी सेम एडवाइस होगी. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करिए. Always focus on the very important first. Prioritize your study in such a manner that you focus on the important areas. But उसके लिए आपको चॉक आउट तो करना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर पाओगे. सो दिस वर्क आई हैव डन फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज. कॉन्स्टिट्यूशन के और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको फर्स्ट वीडियो में दिए थे. अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है, सो दे कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. दिस इज द सेकेंड वीडियो इन विच आई एम गोइंग टू कवर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दीज 3 sections ऑफ कॉर्पोरेट लॉ. Companies Act 2013 is having a very vast syllabus, as you can see. All these chapters you can see, it is a very vast syllabus. इसमें से कुछ important topics है, आप लोग आपके नोटबुक्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आपको ये PPT वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन हैव एक्सेस. एंड आउट ऑफ दिस very important topic is chapter 2, incorporation of company and matters incidental thereto. This is very important topic. You have to be thoroughly prepared with the topics which are very important and prime.
Do mark these topics as soon as possible. Prospectus and allotment of securities, again very important section. शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, यहाँ से भी क्वेश्चंस फेज 1 में भी आ चुके हैं, फेज 2 के लिए भी ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्राइम है. देन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय कंपनीज, वेरी इंपॉर्टेंट. देन नेक्स्ट वन चैप्टर 11 डायरेक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ आपको. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको प्रायोरिटी वाइज इन्हें पहले खत्म करना है और उस हिसाब से आपका टाइम डिवाइड करना है. अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. Meetings of board and its powers, meetings, very important. Appointment and remuneration of managerial personnel, very important again. Then you can go to chapter 27 directly, NCLT and appellate tribunal. यहाँ से भी कई बार questions आते हैं, phase 1 में भी आया था, last year के paper में भी अगर आप देखोगे तो questions were asked from this area. Chapter 28 special codes. So you can see these are all the important topics from the subject of company law, Companies Act 2013. These are the prime ones, इन पे खास focus करो, complete करो. Rest of the chapters you can have an overview, but these are the core topics. Divide your time accordingly. You can now move to LLP Act 2008. LLP Act में से basically salient features of LLP Act is very important and distinguishing features with Partnership Act. Partnership Act और LLP Act दोनों आपको पढ़ना होगा, and जो distinguishing features है दोनों भी acts में, you have to be thoroughly prepared with both the acts. Remember this. The basic concepts, nature and of limited liability partnership you have to go through from LLP. Incorporation of LLP you have to go through. You should know the basic idea of LLP कि उसमें कंपनी के भी फीचर्स हैं और पार्टनरशिप के भी फीचर्स हैं. सो क्या डिफरेंस है, क्या फीचर्स कंपनी के हैं, क्या पार्टनरशिप के फीचर्स हैं, उनका इनकॉर्पोरेशन कैसा है, पार्टनर्स और उनके रिलेशंस कैसे है, पार्टनरशिप एक्ट और इसमें क्या डिफरेंस है, एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी, बिकॉज दिस इज द मेन फीचर ऑफ LLP एक्ट, because it is having limited liability. So this is also very important topic for your preparation. Basics are only asked, but you should be thoroughly prepared with the basics, क्योंकि questions twist होके पूछे जाते हैं phase 2 में. Contributions part, investigation part, winding up and dissolution part. तो LLP में से आप ये कुछ chapters mark कर लो कि ये आपको बहुत important है preparation के लिए, and primarily you have to focus on these topics, and rest you can have a you can go through it, you can study it along with Partnership Act. Remember, only then the concepts will be very clear. And Partnership Act, Companies Act दोनों के साथ आप ये पढ़ सकते हो, क्योंकि इसके फीचर्स जैसे मैंने अभी बताया, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. कौन से फीचर्स पार्टनरशिप से उठाए हैं, कौन से फीचर कंपनीज से उठाए हैं. इस सेक्शन से ट्विस्टेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लास्ट टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, IBC. IBC के दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. अगेन फ्रॉम बैंकिंग एस्पेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सेबी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है. तो यहाँ से आपको क्या क्या पढ़ना है, पावर्स ऑफ NCLT. दिस इज ऑल्सो देयर इन कंपनीज एक्ट विच आई जस्ट टोल्ड यू, चैप्टर 27, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. फोकस ऑन दैट. Procedure and timeline for submission of application to the NCLT. What is the procedure? What is the timeline of application that is made to NCLT? Very important. Rights and duties of financial and operational creditors. Their rights, duties, you have to be thoroughly prepared, क्योंकि SEBI के aspect से यहाँ से questions आ सकते हैं. Voluntary liquidation का concept है, कंसेप्ट आपको थरोली पता होना चाहिए अगर ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो. व्हाट आर द अपील्स एंड हाउ द वेयर द अपील्स लाई एंड द अपीलेट अथॉरिटीज दैट आर देयर अंडर द एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. फास्ट ट्रैक CIRP का कंसेप्ट है, दैट ऑल्सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद. रोल ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, प्रैक्टिकली ये रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स का क्या रोल होता है, इससे कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो यू शुड नो व्हाट इज द कंसेप्ट. मोरेटोरियम का कंसेप्ट भी बहुत करंट इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस में आता है. देन ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज ऑफ कोर्स इज इम्पॉर्टेंट. misconduct, falsification of books, willful and material omission, false representation to the creditors. So this part also you have to treat as being important. आप ये वीडियो को स्टॉप करके भी नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप वीडियो के साथ PPT अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो थ्रू द PPT. ये सब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट
कंटेंट है जो मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ. Do take benefit of it and give priority to these subjects. 100% I cannot be sure shot for anything in these examination. Nobody can be. लेकिन प्रायोरिटाइज तो आप कर ही सकते हो. आपका टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे पहले देना है और कौन से सब्जेक्ट्स पे बाद में देना है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है. Overall strategy for studying corporate law will be that, again I will mention, it is very important area for scoring in phase 2 examination. 20% weightage है. Important और difficult topics को आप segregate कर सकते हो. Segregate करके आप आपका time accordingly divide करो and don't skip anything. I would suggest don't skip anything from this section and solve practice questions. This is the key mantra for cracking any examination. And anyhow, all the ixamBee mock tests are free, available at www.ixamBee.com. Visit our website. You can also have access to SEBI graded legal exclusive online course, comprehensive course that is available at ixamBee. For further details, you can call on this number and visit the website also. We have regular guidance available at ixamBee in various forms by our faculty in the form of notes, study plans, monitoring, one-on-one sessions. These are the exclusive online course features actually. For details, you can visit the website. This is our expert faculty for legal who is always available for you for help, guidance and mentoring at ixamBee. If you have any queries, you can also mention in the comment section of this video. And before I end, I would remind, don't forget to subscribe to the YouTube channel of ixamBee and stay benefited with such kind of videos and updates. Thank you everybody.